Hello and welcome to yet another episode of PonderCast. So today we have a special guest. He's basically an urban planning consultant, and he opines around the sustainability side of things and the urban planning. He shares incredible insights in that particular area. He's Momin Sheikh. So welcome to the show, Momin. Thank you, Danish. How did you get into urban planning, and basically some bit of your background? Right. So to start with my background, I'm basically a civil engineer with a master's in smart cities and wind engineering. So मेरे masters में I would focus on understanding the concept of smart cities. उस वक्त ये नया emerge हो रहा था concept कि smart city क्या होती है और उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है सिटी के अंदर to make it more efficient. और स्मार्ट सिटीज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि टू अंडरस्टैंड इट बेसिकली यू हैव टू फर्स्ट हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट अ सिटी इज. तो उसके ऊपर काफी मेरी रिसर्च रही एंड देन आई जॉइंड विंड इंजीनियरिंग फर्म इन इंग्लैंड जिनका काम था बिल्डिंग की एरोडायनामिक के ऊपर काम करना. एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज वी यूज्ड टू बेसिकली मेक सिटीज comfortable for people to walk around, comfortable for people to sit in outdoor areas. So these kind of things. So that sort of shaped my understanding of what a city is, what it's supposed to do. And then I returned to Pakistan. So this was all in England. Then I returned to Pakistan, and I started noticing a lot of things that were going wrong in Pakistan. So I started speaking up about them. And yeah, that's how basically I started campaigning for these kind of things. मैंने notice किया कि पाकिस्तान में already इसके ऊपर काफी लोग रिसर्च कर रहे थे, काफी लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे कि how we can improve things in Pakistan. So I picked that up. और it's a good thing. काफी लोग सुनने वाले गवर्नमेंट में bureaucracy में who are very keen listeners to this. Do you also work with the government entities, or you are basically an independent consultant या किसी company के साथ काम करते हैं? So basically I work in an engineering design firm. और हमारा business mostly is working with the government departments, helping them solve issues that arise with cities functionality. Mostly water and wastewater में expertise है हमारी firm की. So that's the main sort of aspect जिसके अंदर हम focus करते हैं, how to manage water, how to supply water to communities, clean water, how to manage their sewerage, how to manage their water resources, how to clean the water, जो dirty water आता है उसको किस तरह से dispose of किस तरह करना. That's major. But yeah, other than that, उसके अंदर फिर urban planning के अंदर, transportation के अंदर, इस सारी चीजों के अंदर, because once you get into engineering, then these sort of things become interconnected. So yeah, we basically help government departments dealing with issues that arise with cities. Fascinating. And you alluded to that it's basically your own organization, or is it, It's my father's organization. So my father started in about 20 years ago, and I joined it in 2018. He started in 2000. I joined it in 2018. और मैं कुछ projects को lead कर रहा हूँ उधर. और yeah, that's all. And your father is also a civil engineer? My father is technically a mechanical engineer, but yeah, the business he does is civil engineering related. Awesome. Great background. Yeah. I think this is the kind of thing when you get into water and hydraulics, that sort of things, that's basically mechanical. So yeah, I think it's all related as long as you have the analytical skills, and I think it's only the pursuit. So whatever you pursue. So I think fascinating. Just you mentioned about the smart city and the idea of an ideal city. So can you explain a bit for the layman what a smart city is? Is it basically an amalgamation of technology versus basically the infrastructure, or is it something else? So just for the audience, if you would like to explain what's an ideal city. Let's try to understand first what a city is, what it's supposed to do. Okay, city, very common definition of the but it's supposed to achieve a function. When you see it from a historical perspective, settlements emerge, cities ke upar ab aaye. So what a city is, basically, it's a collection of industries, trade in one area and people. आप एक compact space में एक development create कर देते, एक settlement create कर देते हो, जिसके अंदर लोग रहते भी उधर हैं, लोग काम भी उधर करते हैं, और फिर दूसरे आसपास के शहरों से उधर लोग ट्रेड करने आते हैं, उधर सर्विसेज लेने या सर्विसेज देने आते हैं, उधर से प्रोडक्ट्स लेने या देने आते हैं.
So first of all, that's what a city is. ठीक है. अब जब आपने cities में industries emerge हो गई, trade routes emerge हो गए, where people require कि वो अपने घर से अपने office जाएं, अपने industry जाएं और markets में जाएं. So when you have that sort of thing, तो फिर वो जो लोग उधर रहते हैं, they also need some sort of a leisure space. तो उनके लिए कोई घूमने फिरने की कोई outdoor space, कोई खेलने कूदने की जगह भी होनी चाहिए, कोई cinemas वगैरह. So all of these collect. एंड बेसिकली ये एक सेटलमेंट, एक कॉम्पैक्ट एरिया में काफी सारी लेजर की, ट्रेड की, इंडस्ट्री की, रेजिडेंशियल स्पेसेस, कमर्शियल स्पेसेस, ये सारी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये एक सिटी बन जाती है. दिस इज द पर्पस ऑफ अ सिटी. एंड देन जो सिटी अथॉरिटीज होती हैं, दे हैव टू रन देम. अब जब उन्होंने रन करना होता है तो दे एनकाउंटर डिफरेंट प्रॉब्लम्स. अब उन्होंने इंडस्ट्री को पानी भी प्रोवाइड करना है, एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है, उनका सीवेज मैनेज भी करना है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैफिक है, जब आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो भी मैनेज करनी है उन्होंने. So city managers का और city administrators का majority of the time is spent dealing with these problems, and then they require huge budgets to solve these kind of things. और ये problems को इतनी easy होती भी नहीं है. एक 10 million population, which is a very very big city, 10 million population के city में आपके पानी के pipes हर जगह पे चल रहे हैं, कहीं एक जगह पे लीकेज आ जाए, आपको कैसे पता चलेगा किधर लीकेज आई है? You have to solve it until वहाँ पे कुछ sinkhole develop करता है और सड़क गिर जाती है, तब आपको पता चलता है अच्छा यहाँ पे लीकेज थी. So that's how this concept of smart cities came in, that we sort of integrate technology into the management of cities, the administration of cities. So we sort of monitor the water that's going into each pipe. So if one of the pipes start leaking, then we know exactly on our computer screens that this is a place where water is leaking, so let's go fix it. We sort of understand how people are moving about in our city. किस रोड के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है, किस रोड के ऊपर लोड ज्यादा है, तो उधर किस तरह की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, उधर किस तरह से ट्रैफिक सिग्नल्स ने किस तरह से उसको ट्रैफिक को कंट्रोल और मैनेज करना है, सो दैट पीपल कैन मूव अबाउट एफिशिएंटली. एंड सेकेंडली, cities require a lot of energy to run. तो आपने उसकी नियर बाय आपने पावर प्लांट्स लगाए होते हैं जस्ट टू रन देम. ठीक है. फिर आपको उन पावर प्लांट से बिजली सिटी में लाना इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड इनएफिशिएंट टास्क, क्योंकि पावर लाइंस में काफी सारे ट्रांसमिशन लॉसेस हो जाते हैं. सो हाउ कैन यू यूज बेसिकली लेट्स से resources available within the city to sort of create that energy. आप ऊंची बिल्डिंग है तो आप टर्बाइन टावर की जगह उस बिल्डिंग के ऊपर टर्बाइन लगा लो, तो वो विंड से बिजली बनाना शुरू करते. आप वो सारे बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगा दो, तो वो पूरा इलाका, वो पूरा एरिया डिस्ट्रिक्ट विद इन अ सिटी, वो एक सोलर पावर प्लांट बन जाएगा. तो उसी स्पेस को यूटिलाइज करो, उसको एफिशिएंट करो, और फिर आप उसी सिटी को वो ही पावर प्रोवाइड करो. सो दैट इज समथिंग दैट कम्स इनटू स्मार्ट सिटीज. सीवरेज कितना निकल रहा है उसको मैनेज करना. सो दिस इज व्हाट the concept of smart city is, basically using technology and using efficient means to manage a city. So yeah, to manage awesome. The problems within a city. Absolutely, I think that's a fascinating definition. So thank you so much for that. Isme, I do have a related question. So there is also a concept of urban versus peri-urban, and there is a transmission of you can say exodus of people which are coming from the villages or the smaller cities. And in that case, there is a debate around vertical versus horizontal. तो आपने उसकी मैनेजमेंट की भी बात की. I do have 2-3 questions related to that. कि जितने लोग आएंगे, there would be a problem regarding the sewerage systems. If we specifically talk about Lahore or Islamabad या पाकिस्तानी infrastructure की हम बात करें, so is it also a problem? Do you see कि ये sustainable नहीं है उस लिहाज से? मैंने अभी इस टॉपिक को टच किया कि व्हाट इज अ सिटी, हम उधर करना क्या चाह रहे हैं. हम बेसिकली काफी सारी इंडस्ट्रीज को, लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो हम बेसिकली डेंसिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं. अब जब एक लोअर स्केल के ऊपर एक सिटी होती है और आप उसके इंडस्ट्री के अराउंड आप अपनी हाउसिंग डेवलप कर लेते हो, सिंगल यूनिट हाउसिंग, तो आना जाना आसान है, इतना प्रॉब्लम नहीं है. फिर आप उसके एजेस के ऊपर एक और हाउसिंग स्कीम डेवलप कर लेते हो, आना जाना इतना मुश्किल नहीं होता. बट व्हेन दिस कीप्स ऑन हैपनिंग और सिटी काफी ज्यादा फैल जाती है, then try to understand you have created the problem that you wanted to solve by creating a city. Basically, the farthest of the housing schemes have now become so far from the centers of the city, from the downtowns, from the trade hubs, from the industry, that उनको आने जाने में अगर 1 घंटा लग रहा है, तो फिर why don't they just live in a different city altogether? So that's the problem that you were supposed to solve in the first place. नहीं, अच्छा, इसमें मेरा the question concept of
हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन Yeah, रिगार्डिंग this था is डेंसिटीज के ही हवाले से, बिकॉज जी अर्बन मैं वर्सेस हाँ जी। पेरी अर्बन में हम जब ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेंसिटी हमने क्रिएट करनी है, तो व्हाट्स द स्केल ऑफ आइडियल स्केल ऑफ डेंसिटी, और उसके अराउंड जो प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम वर्टिकल की वर्सेस हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम वर्टिकल पे इसलिए नहीं जा पा रहे कुछ सिटीज में बिकॉज वही वाले प्रॉब्लम्स हैं कि वो डेंसिटी जो है इट कांट बेसिकली विथस्टैंड दैट काइंड ऑफ अ लोड। उसी पे अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने किस टाइप की डेंसिटी क्रिएट करनी है, कितनी डेंसिटी क्रिएट करनी है, डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री यू प्लानिंग फॉर दैट एरिया और डिस्ट्रिक्ट। सही। अगर आप उधर प्लान कर रहे हैं फॉर एन इंडस्ट्री व्हिच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्कर्स एंड यू नीड अ लॉट ऑफ डेंसिटी, इफ यू आर प्लानिंग फॉर एन एरिया जिधर आपको इतने ज्यादा नहीं चाहिए और रिमोट वर्किंग भी हो सकती है, देन यू सॉर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंट डेंसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज उस चीज के ऊपर क्रिएट कर डिपेंड करती है। सही। Secondly, this problem that it's going to take a lot of load, this is a solvable problem. हम्म, This is a problem that आप एक डेंस एरिया क्रिएट करते हो, आपके अंदर उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। अब उसके अंदर आपने वाटर प्रोवाइड करना है, आपने सीवरेज उसका मैनेज करना है, आपने उसकी ट्रांसपोर्टेशन देखनी है, ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और फिर आपने उसका सॉलिड वेस्ट जो उसकी कचरा वगैरह होता है वो भी मैनेज करना है। सो आप जितने जितने लोग हैं, लेट्स से आप 1 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो वो चाहे वर्टिकल हो या वो हॉरिजॉन्टल हो, आपने उतना लोड तो मैनेज करना ही करना है। अगर आप उसको छोटे एरिया में करोगे, यू विल हैव टू प्रोवाइड बिगर वाटर लाइंस, यू विल हैव टू प्रोवाइड बिगर सीवेज लाइंस, हम्म, एंड यू विल हैव टू हैव बिगर कैपेसिटी फॉर टेकिंग आउट द सॉलिड वेस्ट। अगर आप सही बात। उसको हॉरिजॉन्टली ज्यादा ज्यादा एरिया पे स्प्रेड करोगे, देन यू रिक्वायर मोर मूवमेंट, मोर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दोज वाटर, सीवरेज एंड सॉलिड वेस्ट लाइन। तो आपने उसको मैनेज तो करना है, हम्म, but it's how you manage. That's where you that's where the solution lies. अब जब हम्म, आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो, तो आप उनको you have to move say 10,000 people into an area every morning. आप उनके लिए बड़ी सी हाईवे बनाते हो या आप उनके लिए एक ट्रेन बनाते हो, that is entirely a management issue कि हम्म। आप उनको किस तरह से मूव करना चाह रहे हो उस वर्कफोर्स को उस एरिया में। फॉर एग्जांपल If I, मैनहट्टन है, hmm, yeah, just yeah, to, good. just a small example. For example, Hmm, Manhattan hai. It's a very dense area, and that sort of density you don't find it very often in the United States. You find tall buildings, but you don't find that sort of density that Manhattan and New York City has. अब वो रोज दिन में तकरीबन 4.5 मिलियन वर्कर्स को उस एरिया के अंदर लेकर आते हैं, जो कि शाम में उधर से चले जाते हैं। If they were to bring those people into that area by highways, then they would have required huge highways. But hmm, instead, they have made a train and subway system, जिससे वो बड़ी easily, बड़े sustainably वो लोग आ सकते हैं और शाम में चले जाते हैं, and it doesn't have a lot of huge space implications. वरना तो जितनी buildings हैं आधी से ज़्यादा उसकी जगह roads ही चलती हैं वहाँ पे। So hmm. this is how you basically manage these kind of issues. Absolutely, I think great example. मेरे इसमें जो सवाल था ना वो था कि अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, एंड Mhm, in that case it's primarily a management or administrative issue कि आपने किस smaller chunks में mhm, city को divide करना है. In that case there could be certain mhm, densities in certain areas. तो mhm, why do we call it a different city? मतलब ये अगर हम for example शेखुपुरा versus लाहौर की बात करते हैं या कसूर versus लाहौर की बात करते हैं, mhm, Lahore is further divided into multiple districts, and there are separate managements for that. There are ACs who mhm, are doing. So there mhm. could be administrative units on the Yeah, yeah. surface of it. It could be called Lahore, or it could be called something else, or it could be called you know uh, three different names. But in terms of the management or Mhm. the administrative issue, I think उसमें how do you define uh, scale of a city? So if I try to summarize and understand your question, it's that Hmm. एक शहर के अंदर काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स या काफी सारे टाउन्स हैं, Hmm. और आप किस तरह काफी सारे एरियाज हैं, आप किस तरह से डिफाइन करते हो कि ये एक सिटी बनती है, और आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि ये सारे स्मॉल टाउन्स बिल्कुल. जो हैं ये Hmm. सेपरेट सिटीज हैं या फिर ये सारे एक सिटी हैं? क्या इज दैट एम आई It's अंडरस्टैंडिंग योर yeah, क्वेश्चन? this is the question, but it's on your comment जहाँ पे आपने कहा कि वो किसी और सिटीज में भी जाके रह सकते हैं, अगर उन्होंने रोज एग्जोडस करना है और रोज आना है. तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन हम एक ही सिटी के अंदर कर देते हैं जहाँ पे जो लोग एक एरिया में रह रहे हैं, दे आर क्लोजर टू वेयर दे वर्क, दे हैव everything in the proximity of where they are living. So I think it's just in that particular case वो फिर नाम का जो उसको लाहौर कह दें या कोई और सिटी कह दें, I think wouldn't make a difference. So you think I'm या thinking on the right line? या सो फंडामेंटली going back again, why are you creating a city? वो इसलिए कि एक center में trade hub है where you're trying to move, Hmm. where you're trying to have sort of majority of your industry. सही. When you have separate cities,
आप सेपरेट सिटीज क्रिएट करते हो, तो वो आपको हर चीज डिफरेंटली हर सिटी में जाके सेपरेटली क्रिएट करनी पड़ती है वही इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल लाहौर हैज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेट्स से. सही. इसका मतलब ये नहीं है और किसी डिफरेंट पाकिस्तान की सिटी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, बट लाहौर के इर्द गिर्द के जो शहर हैं वो कोशिश करते हैं कि टेक्सटाइल का बिजनेस या टेक्सटाइल डिजाइनिंग का उनका बिजनेस वो लाहौर में इसलिए हो क्योंकि लाहौर में वर्कफोर्स भी ज्यादा है, लाहौर में जो लेबर है वो थोड़ी सी स्किल्ड और एजुकेटेड भी ज्यादा है कंपेयर टू द आउटस्कर्ट्स. सो इफ दे सेट अप देयर इंडस्ट्री ओवर देयर, दे विल get workers easily, they will get the raw material and all the other ingredients they need easily because Lahore mein wo markets available hain. So that is why you sort of try to create density of industries in an area. आप लेकिन इसको आप smaller chunks में divide करके आप उसी शहर के separate areas में भी आप move कर सकते हो. This is a concept जो कि काफी European cities adopt करी हैं, जिसको ये 5-minute cities या 15-minute cities कहती हैं, where the concept is कि आपके within the 15-minute traveling distance आपकी industry, आपके grocery store, आपके space to work, space to shop, leisure areas available होने चाहिए. What that achieves is on a daily basis you don't need to make long commutes. आपको daily basis पे वो करने की जरूरत नहीं है, and yet it's located within the same city where whenever you require you can go and get those raw material and you can sort of get a workforce and you can ask them to move to a different area within the city so that they don't also have to commute daily. So that sort of saves a lot of energy that is spent on transportation every day. So that sort of creates smaller districts which you're able to roam around, in which आपकी leisure opportunity सारा कुछ available है, but yet you are within that larger city और आप at will हफ्ते में एक दफा आप you can go around to a different place, you can do business in a different place. So that sort of policy creates efficiency of having smaller districts within a city. Yet if you move to a different city altogether, that sort of starts creating inefficiency. For example, Lahore है और गुजरांवाला है, गुजरांवाला और लाहौर के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा, हालांकि अब ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही शहर बन चुके हैं जिस तरह से आबादी स्प्रेड की है. But if you require people from Gujranwala to come to Lahore to trade and to work daily, that would be very inefficient. Yeah. You can achieve it. I'm not saying that you can't do it. You can sort of run a train service which sort of gets Gujranwala people to Lahore within 45 minutes or something. You can achieve it, but it starts becoming inefficient. So ये difference है in having different cities and having a cluster of areas within a city. Once again, this is not to say that one of these things is better than the other. ये जब हमारी एडमिनिस्ट्रेटर्स और हमारे पॉलिसी मेकर्स ये पॉलिसी बनाते हैं कि किस तरह से इस रीजन की इकोनॉमी को ग्रो करना चाह रहे हैं, दैट इज व्हेन दे डिसाइड whether it's more suitable to have a different cluster within this own city or whether it's more beneficial to have another city altogether. So this is not like good or bad. This is just different sort of scenarios that they need to play to understand. Yeah, I think that's amazing. That's what I was trying to allude to. I think the 15 or 10-minute city, the societies that we're creating in Lahore, I think they're following the similar concept, but I think there are a lot of areas of improvement. I think on your Twitter, you are quite a critic of wider roads, because wider roads move a lot of traffic. And there is basically, a debate versus, public transportation versus the wider roads or, the elevated expressways. So do you see it's basic, because in the developed countries, we also see wider roads. So for the layman, if you were to explain what's the ideal trade-off and how do you, what's the base of the criticism for the wider roads? So, first of all, Danish, to understand, when we widen a road, what we're trying to basically do is we're sort of rearranging the transportation method within that area. आपकी mobility का pattern rearrange कर रहे हैं. For example, आप अपने घर से निकलते हो, you go 2 blocks away, you get to the main road और आप उसे drive करके जाते हो and you take the exit closer to your office और आप उधर चले जाते हो. But जो आपके घर के सामने से road गुजरी है, आप उसी को widen कर दोगे and internal roads को widen करते जाओगे, then more of the traffic will start taking those internal roads because अब वो widen हो गई होंगी और वो main roads बन जाएंगी. सही. When ये सारा कुछ हमने लाहौर में अभी केवलरी रोड के ऊपर देखा है. केवलरी रोड which was supposed to be an internal road because काफी सारी DHA की ट्रैफिक उसके ऊपर से गुजरना शुरू हो गई थी.
DHA का मेन कनेक्शन वो नहीं था। DHA का मेन कनेक्शन फिरोजपुर रोड से था। DHA का मेन कनेक्शन फिर जब रिंग रोड डेवलप हुई, रिंग रोड से भी बन गया एक। तो DHA के मेन कनेक्शन ये नहीं थे, बट काफी सारी ट्रैफिक इधर से मूव करना शुरू हो गई। देन दे क्रिएटेड वन ओवरपास, दे क्रिएटेड अनदर ओवरपास। जब ज्यादा लोग DHA में easily commute करना शुरू हो गए because the road has just widened and it's easier to travel on that road now. So DHA also expanded another few phases. When that happened, a lot more traffic started flowing on the same road. Right. Now you have to create another underpass and another flyover just so that traffic moves. इससे रिजल्ट क्या होगा? ज्यादा लोग DHA पहुंचेंगे conveniently, वो एक तो और phases launch कर देंगे, and then more of the traffic will have to move from the same road, and then you will have to widen it again. So this is a cycle. This is a cycle that a lot of cities have discovered within the past few decades, that if they widen a road, this happens. ये लाहौर की ट्रांसपोर्टेशन मास्टर प्लान में एक मेन रोड नहीं थी, बट अब वो बन गई है। अभी लाहौर का मास्टर प्लान, एक डिस्ट्रिक्ट का मास्टर प्लान 2017 में बना था, फिर एक 2022 में बना है। मेरे ख्याल से 2017 के अंदर वो एक आर्टीरियल रोड नहीं थी, एक मेन रोड थी, बट एक आर्टीरियल जिसको आप कहते हो कि सॉर्ट ऑफ हाईवे, वो नहीं थी, बट अब वो बन चुकी है। कोई भी नेक्स्ट मास्टर प्लान बनेगा लाहौर का, उसके अंदर उसको सॉर्ट ऑफ हाईवे डिक्लेयर करेंगे। अब जब वो हाईवे हो गई तो फिर आप उसको एलिवेट भी कर दोगे। सो दिस इज अ साइकिल। एंड व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका नहीं है। अगर आप उनको एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करो in the form of public transport, then the need to widen roads will be a lot less. So And this is And do yeah. do you think कि इसका ताल्लुक cluster से भी है? So because DHAs are all posh areas, and in that case everybody has a car. So maybe decentralize some of the phases and don't have the phases altogether. Because obviously even if we have the public transportation, maybe there would be lesser habit of usage in that particular case. Yeah, I mean, one of the first when you introduce public transport and you want to promote the usage and you want to promote the ridership, one of the first things you do is you restrict cars. You make it tougher for cars to move. You either do that by, first of all, not widening the roads, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम लगे उधर, और कई cities congestion taxes भी introduce करती हैं, so it's more expensive to move by car. The reason is not that you should not be able to take your car. If you want to take your car, you should be able to. But आपकी cost, आपका time थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, so that other people have an incentive to take the bus or to take the metro to that area. अगर उसमें से let's say there are 10 cars going there, अगर उसमें से आप 4 को भी incentivize कर देते हो या disincentivize कर देते हो from using the road, और वो 4 public transport use करना शुरू कर देते हैं, तो your traffic is already a lot less. Absolutely. So it's a lot more manageable. The size of each car makes this problem very severe, because एक बंदे का size तो छोटा सा है, but the car he's surrounding himself, that's very big. So each car contributes exponentially to our traffic. वो बंदा सिर्फ एक होता है, लेकिन वो गाड़ी का size बहुत बड़ा होता है. So we have to start encouraging people to take alternative forms of transportation. Makes sense. And I think a brilliant point. I think amazing explanation. So इसमें जो एक लेंस है इंटरसिटी वर्सेस इंट्रासिटी, इफ यू वर टू एक्सप्लेन दैट एज वेल, बिकॉज हम यूएस की अगर बात करें, सो यूएस is known for roads leading to nowhere. They had the roads where basically going to certain areas which doesn't have the industry, but they still have the road for that. So how do you classify intercity versus intracity from that lens? To try and make perspective from the policy lens of it, US let me try to understand your question. Is it about having roads in US or नहीं मैं bigger roads? Yeah, bigger roads की policy. मैं जैसे अगर बात करूं, अक्सर पीएम लेन का क्रिटिसिज्म होता है कि they prioritize public transportation in the cities, ठीक है, and but they also are known for the the highways and the motorways. So intercity versus intracity की जो distinction है, you explained that within the city we discourage having the wider roads, but the same concept if we apply that for the intercity. Yeah, so first of all, अगर आपको efficient mode of transportation चाहिए, तो what your ideal scenario should be कि you should have sort of public transport for intercity travel, say a train. So अगर आप गुजरांवाला से लाहौर आ रहे हैं, you have a train, you take the train from Gujranwala train station and you come to Lahore train station,
And then a public transportation network branches out from Lahore train station. So you should be able to move around within the city on public transport. And then you go back from the same method and you don't require a car altogether. When you don't have that intercity transportation method, और आपको किसी हाईवे पे या किसी गाड़ी के ऊपर ही गुजरांवाला से लाहौर आना है, तो फिर आप लाहौर आके आप मेट्रो नहीं यूज करोगे, आप अपनी डेस्टिनेशन पे गाड़ी ही लेके जाओगे। और फिर बिकॉज उन गाड़ियों के लिए आपको सड़कों को वाइडन फिर से करना पड़ेगा क्योंकि अब ट्रैफिक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, so you discourage as well for the interest? Yeah, I definitely discourage. लेकिन इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि when you create public transport within a city, first of all, your priority is not people from Gujranwala. Your priority is people within Lahore who are trying to move about in their daily commute and to their offices, to their industries. So in that aspect, not having train within cities is still okay, because people of Lahore can sort of move about on their buses, on their metro, on their orange train within Lahore. Obviously, Gujranwala के लोगों के लिए आपको वो गाड़ी पे आएंगे और वो गाड़ी पे अपना काम करेंगे. But people working and living in Lahore can go about their daily 5 day a week on their public line. हाँ, ये बहुत अच्छा होगा कि लाहौर का रेलवे स्टेशन जो है उसके ऊपर ऑलरेडी ऑरेंज लाइन का स्टेशन आके रुकता है. अगर उसको इंटीग्रेट कर दें, so it would be easier for people from other cities to come on train and not have to take car. It would be easier. और एक एयरपोर्ट के साथ भी आप कनेक्शन बना दो, तो it would be easier for people who are coming on plane as well. But not having that does not sort of reduce the importance of public transport within the city. So yeah, that is. और दूसरी चीज उसमें एक और मैं important point mention करूँ. When you are creating intercity travel from public transport, say from trains, not having public transportation within the city sort of reduces the importance of intercity travel. So intra-city travel अगर नहीं है, intra-city public transport अगर नहीं है, तो intercity की importance reduce हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने शहर से ट्रेन स्टेशन एक गाड़ी पे जाना होगा, और फिर जब आप उस शहर में पहुंचोगे तो फिर आपने उधर से आगे गाड़ी पे जाना होगा, तो आपको वो चीज ऑलरेडी डिसइंसेंटिवाइज कर रही है from traveling on the train. You would prefer taking your car. So if you want to move towards this ideal scenario, then yes, the ideal way of moving this is that first you establish a public transport network intra-city, then move towards intercity. Absolutely amazing point. And I think इसी से एक related था question. एक Twitter पे मैं देख रहा था, हमजा शफकात हैं DC of Quetta. He mentioned that we should move buses out of the cities. So आपने उस पे comment किया था, just for the audience as well, how preposterous it is. Right. इसमें हमजा शफकात की कोई fault नहीं थी इसके अंदर. He was just doing the job, जो कि उन्होंने explain भी किया कि it had already been decided before he had taken this post. And secondly, Hamza Shafqat ने after a few days एक और tweet किया where he talked about bureaucracy not being suitable for certain jobs, that their administrators वो इस तरह की jobs करने के लिए suitable नहीं है. उसमें I believe he recognized the issues you're having by placing bureaucrats in places where you actually require expertise of a different kind. Bureaucrats की expertise एक different kind की है, और जो city को चलाने के लिए और उनकी efficiency create करने के लोग हैं, उनकी expertise एक different kind की है. So none of the fault with Hamza Shafqat, but उस scenario में हुआ क्या? What they're trying to do is they're trying to move an intercity bus terminal outside the city, which means that say it's an interprovincial bus terminal. So for example, अगर वो bus terminal है तो उस पे बस आती है कराची से, उस पे बस आती है लाहौर से. So let's imagine this scenario. मैं लाहौर से जाना चाहता हूँ कोटा, and I take the bus. अगर मेरे शहर का bus terminal city से बाहर है, how am I going to get there? That's the first problem. Am I going to take a car, a taxi, go there? ठीक है, उधर से मैंने बस ली, बस will take. हाँ जी, वो बस मुझे लेके गई क्वेटा में उसने मुझे शहर से बाहर एक टर्मिनल के ऊपर उतार दिया. Now I have to get into the city. Am I going to get a taxi again from that terminal into the city? Now, if I get a taxi, and if all the 50 other passengers who are traveling with me on that bus get taxis, that's 50 taxis moving into the city instead of just one bus. So what do you think causes more traffic? 50 taxis moving into the city, or one bus taking all those passengers in? So
जब गाड़ी चलाते हैं ना हमारे यहाँ पे अर्बन प्लानर्स, तो उनको वो बस आके इतनी बड़ी लग रही होती है, वो कहते हैं यार ये बस को तो उठा के भाई फेंको, लेकिन वो उसके पीछे साइंस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते कि इट्स कैरिंग अ लॉट मोर पीपल इनटू द सिटी। अगर आप इनको उठा के बाहर फेंकोगे तो फिर वो सारे गाड़ियों पे आएंगे एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट मोर ट्रैफिक। सही बात। दिस इज समथिंग दैट दे हैव नॉट कंसिडर्ड। या आइदर ये होगा या फिर वो 50 लोग जो बस में आ रहे थे उसमें से सिर्फ 40 आएंगे या 30 आएंगे, उसमें से कई आना छोड़ देंगे, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू गेट टू क्विटा। एंड व्हाट दैट्स गोइंग टू डू is that's going to affect your economy. That's you want as many people to come to Quetta as possible to engage in their business, to engage in their leisure activities. These sort of decisions sort of have an unintended consequence on the economy as well, that city planners and administrators are not taking proper consideration of. Yeah. absolutely. I think great explanation. And I agree. It's not a problem of Hamza Shafqat. It's basically a systemic issue around decision. And it's related to other areas as well. For example, pricing control, it's not the job of our TC. So they are doing that as well, Yeah, or the yeah. EC. Also an example, I was, going through the case study shared by Voice of America. And I think if we see that from the, the lens of Pakistan, I think Islamabad as an example, where we have Kashmir Highway, it's a wider road. And in that case, there are a lot of accidents that are happening. And I think you tweet a lot about that as well. There is a city which Voice of America claims, Hoboken. They don't have any accident-related deaths for last 5 years. And I think you also have some kind of a research related to that, how they developed that particular city. So if you can, talk about that. Right. I haven't taken a look into Hoboken, but I have been observing issues with Islamabad. Look, what they're doing is, first of all, Pakistan has a very this very unique problem where they're encouraging usage of cars, but they don't have sort of traffic safety mechanisms or even the driver's licenses mechanism. आपके लिए लाइसेंस एक्वायर करना बहुत इजी है, आप जाते हो, वो आप एक फॉर्म फिल करते हो और वो आपको लर्नर्स लाइसेंस दे देते हैं, उसके रिक्वायर्ड डेट के बाद जब आप वापस जाते हो, so they take a very basic test from you where you forward and you reverse and you get your driver's license. उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको बताया जाए कि आपने गाड़ी सड़क पे चलानी कैसे, आपने पेडेस्ट्रियंस को किस तरह से सेव करना है. So none of that exists. So you have a very unique situation in Pakistan where you're sort of encouraging cars, but also you're not training them properly to do that, to sort of drive. And then Islamabad में आकर आप उन सड़कों को even wider करते जा रहे हो, आप उनको बड़े से बड़ा करते जा रहे हो. मतलब you're noticing the problem of roads in Karachi, in Lahore, जहाँ पे सड़कें उतनी बड़ी नहीं है, बड़ी हैं, उतनी बड़ी नहीं है कि बड़ी सड़क को आप थोड़ा सा बड़ा करो तो उस पर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं. And then you're going to Islamabad and you're making them even bigger. Why are you making them bigger? Because you think when a foreign dignitary comes, it would be very impressive if he drives on a huge road. Yet on a normal day, people have to drive there, और उनको unsafe vehicles में with unsafe drivers उसके ऊपर move करना पड़ता है. और जब वो road huge होती है तो फिर उस road के ऊपर swerve भी ज्यादा होता है. आपने एक लेन से दूसरी लेन में जाना है, अगर उस रोड के ऊपर सिर्फ दो लेन्स होंगी तो स्वर्व कम होगा, जबकि अगर उस रोड के ऊपर कोई 5-6 लेन्स होंगी तो स्वर्व काफी ज्यादा होगा. द स्वर्व इज व्हाट कॉजेज अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स, क्योंकि आपको प्रॉपर्ली देखा नहीं जाता कि पीछे से कौन आ रहा है ये वो. सो not knowing about Hoboken, but a lot of cities in Europe, they try dealing with traffic accidents by making their roads narrower and reducing the speed of the roads, not reducing the sign कि जी यहाँ पे 60 की लिमिट थी अब यहाँ पे 40 की लिमिट हो गई, नहीं. they created new alignments of their roads, they created curves on their roads और उनको पतला किया इस तरह से कि उसके ऊपर चलाना ही मुश्किल हो. जिस सड़क के ऊपर 60 तक जाना ही मुश्किल होगा वहाँ पे एक्सीडेंट कम होगा. या फिर आप इतना बड़ा रनवे बना के उसके ऊपर कहोगे नहीं नहीं आपने सिर्फ 40 पे चलाना, that's not going to happen. Someone is going to break the law and is going to speed. तो आपने स्पीड कैमरास भी लगाए हो. Let's be honest, people can afford to pay speed fines enough in our country to not care about the speed cameras. So yeah, this is a problem that Islamabad is facing. उधर रोड से इम्प्रेस होते हैं लोग काफी ज्यादा, लाहौर में भी होते हैं, कराची में भी होते हैं, बट उनके पास फंड ज्यादा है. जिस तरह से वो रोड्स डेवलप कर रहे हैं विदाउट एनी सेफ्टी प्रोसीजर्स और विदाउट एनी सेफ्टी मैकेनिज्म, विदाउट एनी केयर फॉर द पेडेस्ट्रियंस, यू सी दैट हैपनिंग डेली. और आपने देखे कई कम्युनिटीज के तो बीच में से उन्होंने हाईवेज गुजार दिए जिसके ऊपर से ट्रक्स गुजरते हैं. नाउ उस कम्युनिटी में एक साइड पे घर है, दूसरी साइड पे स्कूल है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उस सड़क को क्रॉस करने जाना होता है, एंड यू सी दैट ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस that someone gets hit, either their parent gets hit, their child gets hit.
जब आप एक कम्युनिटी के अंदर से इस तरह से हाईवे गुजार रहे हो तो व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग वुड हैपन, बिकॉज आपने क्रिएट तो सिर्फ ये उन लोगों के लिए किया है जो कि गाड़ी चलाते हैं, बट इस मुल्क में तो ज्यादातर लोग वो ही रहते हैं जो कि जिन्होंने सड़क को टाप के दूसरी तरफ जाना होता है. So I believe this is a policy of inequality that they're doing, but also without any consideration for road safety. Makes absolute sense. I think the next piece is regarding the environmental side of things. I think you also have experience and you also talk about the environmental problems, especially vis-a-vis Lahore. Yeah. So Yeah. just for the journal audience, we often talk about the air quality or the 2.5 PM, and people talk about that this is basically due to the fire eruption. People are burning their crops. Do you think it's a poly crisis? It's stemming from multiple sources, not just one. So fuel is, I think the number one source is the fuel, especially if we talk about the fuel that is used by the vehicles, and apart from that, the fuels that we are burning in homes as an alternate for the gas. Lahore smog crisis or Punjab's smog crisis. Yes, it's sort of a multi-crisis. जो factors उसको cause कर रहे हैं, it's not a singular one. There are a lot of them. Yes, transportation is the massive, it's the most major component which impacts our smog. लेकिन it's not just because of the fuel. It's also because how transportation policy is designed. हम सारा कुछ गाड़ियों की तरफ मूव करते जा रहे हैं. हम आपने कहीं पे भी जाना है आप उसको गाड़ी पे मूव कर देते हो. इवन ये जो नए सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स डेवलप हुए हैं, इसमें भी आपने इवन क्रॉसिंग द रोड आपने इम्पॉसिबल कर दिया. Even if you want to cross the road, you want to go to the other side, you're encouraging either take a motorbike or take a car to go to the other side. So this is sort of the way in you're promoting cars. Secondly, you're making roads bigger. And another thing about cars is that they're sort of dust generators. I believe I've tweeted about this. आप गाड़ी को एक जगह पे घास लगी हुई है, आप उधर से sort of उसको drive करते जाओ या उधर खड़ी करते जाओ, you will notice grass will start decreasing और वो जमीन जो है वो dust बनती जाएगी. Now that dust also हवा चलती है, वो dust पे उड़ती है और वो smoke का बाइस बनती है. Another important thing about garbage management, when you have created so much of traffic within the city that एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो गया, what happens with your garbage is that it starts being collected less often. जब आप उसको when it starts getting collected less often, then it starts being collected in the streets. And some streets, some neighborhoods, some communities, they just burn it because they believe that having that garbage heap in their community is causing more diseases than, say, burning it would cause through smog. So compound effect हमारे शहरों पे बहुत ज़्यादा होता है because हर जगह पे वो burning शुरू हो जाती है और वो शुरू हो जाता है. But because of all the traffic, वो चीज़ उठ नहीं रही. वो जो आपकी गार्बेज थी उसने गार्बेज ने कलेक्ट होना था और उसने एक डिफरेंट साइट के ऊपर ट्रांसपोर्ट होना था, वो नहीं हो रही. फिर जो आप बड़ी से बड़ी हाईवेज बनाते जा रहे हो, what it's also doing, आप रोड्स को बड़ा करते जा रहे हो, what it's also doing is it's encouraging more trucks and lorries, diesel combustion engines to pass from within your cities. So आप for example कई उन चीज़ों ने बाईपास लेना होता था क्योंकि वो आपके शहर के अंदर आ नहीं सकते थे, तो they would have taken a longer route around the city and go there. अब जब आपके शहर की सड़क ही इतनी बड़ी हो गई तो it's easier for them to travel through it. तो उससे भी emission increase होती है. So transport का sector जो है, it's causing the most. Crop burning is a big factor. जैसे कि crop burning होती है, मेरे ख्याल से वो सारा grey color उसकी वजह से होता है. But this is also something that needs to be recognized by policymakers who are trying to address this smog crisis. कि वो crop burning is only for a small period of time. जबकि smog lasts for months. It lasts for months after the crop burning is over. Or even in summer months when there's no crop burning, even in spring months when there's no crop burning, आप फिर भी देखते हो वो haze आ जाती है. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जब कोविड में लॉकडाउन हुआ था और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर शट डाउन, एग्रीकल्चर सेक्टर तो शट डाउन नहीं हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई थी और एयर क्वालिटी इंक्रीज्ड मैसिवली. So this is your evidence that this is what's causing.
Or besides, this is something that a lot of other cities have addressed. Paris has addressed smog. China's Beijing has addressed smog. So we need to learn what they did to solve the smog crisis. And I don't believe Pakistani cities are currently doing that. Absolutely. And I think exactly what I was trying to get to. It's basically an urban planning issue. And in that case, it can be subsided by using similar mechanisms that you have explained. I think you alluded to Chinese combating with the smoke crisis. I think that there are 10 or 15 cities in China who have a similar problem. They are also creating at one point in time the concrete jungles as we speak. Uh, so how did they go about solving the problem without so not going towards the lesser development or lesser is it basically the smaller roads that like you were explaining earlier, or is it basically the quality of the fuel that they are using? Because I think in terms of the footprint, if we compare Beijing versus Lahore or Beijing versus Islamabad, I think they might have a lot of consumption from that standpoint. Yeah, and I think this would be one of the most important points for audience to understand, that it's not the concrete jungleization that causes smog. In a city like Lahore, it's the avoidance in creating a concrete jungle that's causing the smog. चाइना में उन्होंने सबसे बड़ी चीजें ये की कि उन्होंने स्मॉग फ्री जोन, कार फ्री जोन्स भी क्रिएट किए विद इन कम्युनिटीज. फॉर एग्जांपल एक सेक्टर है मेड अप ऑफ 2 to 3 ब्लॉक्स, उसके अंदर टॉल बिल्डिंग्स तो हैं और टॉल बिल्डिंग्स कंटिन्यू बीइंग बिल्ट, बट उसके अंदर कार नहीं आ सकती थी. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से समवन हु लिव्स इन अ टॉल बिल्डिंग विद इन दैट एरिया, उसको गाड़ी अपनी थोड़ी सी डिफरेंट जगह पे थोड़ी सी दूर खड़ी होके आना पड़ता था. एंड जहां पे उसने ऑफिस जाना था उधर भी यही हिसाब है, उसके ऑफिस के थोड़ी दूर उसने गाड़ी खड़ी करनी होती थी. बट व्हाट दे डिड वाज इट आल्सो हैड effective bus connections and public transport connections. So over time people started realizing कि अगर मैं अपने घर से बस लेके अपने ऑफिस जाता हूँ तो मुझे वो चल के इतना दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, फिर गाड़ी पे जाके फिर चल के इतना दूर, तो मेरे लिए वो इजी हो जाएगा. दैट्स हाउ दे सॉर्ट ऑफ started moving people away from public transport. एंड चाइना में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और मैस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स जो डेवलप हुए हैं, they've happened almost in the last 2 decades. और उनकी ग्रोथ जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, that's sped up after the development of mass transit corridors, not before. उससे पहले वो सड़कें बना रहे थे, उससे पहले उन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरचेंजेस और हाईवेज बनाई जो कि हम तस्वीरें देखते थे, बट उसने उनकी ग्रोथ इतनी बूस्ट नहीं की जितनी जस्ट बाय क्रिएटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्होंने की. सो दिस इज व्हाट आई बिलीव पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम लाहौर जैसे शहर में या इस्लामाबाद जैसे शहर में भी ऐसा ही करेंगे कि क्लस्टर बनाएंगे ऑफ कंक्रीट जंगल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स, जिसके अंदर आपकी एक बिल्डिंग के अंदर 1000 लोग रहते हैं और दूसरी बिल्डिंग ऑफिस की उधर 1000 लोग काम करते हैं, देन दोज पीपल वुड गेट डाउन फ्रॉम देयर बिल्डिंग एंड गो टू देयर ऑफिस बिल्डिंग. उनको गाड़ी पे नहीं आना पड़ेगा, व्हिच मींस कि स्प्रेड ऑफ सिटीज विल आल्सो स्टॉप. स्प्रेड स्टॉप होगा तो जो सिटी की पेरिफेरीज के ऊपर जो फॉरेस्ट कट होकर नई हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं वो भी नहीं बनेंगी. So when you try to create density, when you try to create this concrete jungle, इसका precisely point ही यही है कि environmental protection. जब आप expand नहीं करोगे तो आप environmental degradation भी कम करोगे. हाँ, उस छोटे area का जहाँ पे concrete jungle बना होगा उसका carbon footprint will be a lot higher than अगर वो तो concrete jungle नहीं होगा. But overall on a larger scale उसका carbon footprint कम होगा कि किसी को गाड़ी लेके नहीं जानी पड़ रही अपने अपने place of work पे. पेरिफेरी पे एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो प्रोटेक्टेड है, फॉरेस्ट लैंड है तो वो प्रोटेक्टेड है. सो this is how this policy of creating density, creating urbanization helps in environmental solutions. चाइना में इसके साथ let's recognize उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इंट्रोड्यूस की, फ्यूल क्वालिटी भी कंट्रोल की उन्होंने, और उन्होंने कार यूसेज को मेनली रिड्यूस किया. Discuss. और जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन थी उन्होंने उसके अगेंस्ट भी एक्ट किया. उन्होंने रेगुलेशन इंट्रोड्यूस की, जो इंडस्ट्रियल एमिशंस थी दे वुड हैव टू बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड. और उन्होंने अर्बन प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज किया, इंडस्ट्रियल एरियाज को कंप्लीटली मूव आउट नहीं किया, बट छोटे इस तरह से एरियाज क्रिएट किए उन्होंने विद इन द सिटीज जहाँ पे क्लीन एयर जोन थे, जिसके अंदर कोई इंडस्ट्री या कोई गाड़ी या कोई इस तरह की पोल्यूशन वगैरह नहीं होगी, व्हिच सॉर्ट ऑफ हेल्प्ड controlling where this emissions were coming from. So yeah, credit to them. They did a lot more than just transportation, but yeah, they did a lot to control transportation as well. Sounds amazing, yeah. And I think that's a great nuance that people generally don't understand with concretization. If we are creating the structures, I think that's one-time effort versus what we are doing with the traffic consumption. So I think
just for the current CM's performance regarding the artificial rain, do you have any? Do you see it as a long-term solution, or is it basically a one-off solution? One-off solution. यार मैंने तो वो बारिश होते हुए देखी भी नहीं, तो आई कैन नॉट रियली से एनीथिंग. वो आई वोक अप ऑन न्यूज़ में आके उन्होंने आर्टिफिशियल रेन करा दिया ना, वाज लाइक वेयर. और आई वोक अप और उस दिन स्मॉग फिर भी ठीक, सो इट डिडंट रियली डू एनीथिंग. Hypothetically speaking, Tanish, let's say this artificial rain on that day was huge and it reduced smog on that day. उसने उस दिन smog खत्म कर दी. उसने जो sources जो हैं source अभी है smog की वो नहीं खत्म की. So that source is still emitting, and 2 days later you're going to have smog again, which is what happened when they did that artificial rain. उससे अगले दिन इतनी शायद नहीं थी, but 2 days later it was back again. ठीक है, because आपने source को नहीं counter किया ना. Let's say you have something burning in your room and it smells bad, and you start doing air freshener, but you don't remove the thing that's burning. You're going to have smell in your room. So it's not, you're not combating the source. So great effort. He tried to do smog, tried to counter smog by doing artificial rain. But I believe his understanding was coming from the fact कि लोग कह रहे थे कि यार बारिश होगी तो स्मॉग खत्म हो जाएगी, तो उसने कहा यार आर्टिफिशियली करा देते हैं फिर. वो सोल्यूशन नहीं था, ना ही वो सोल्यूशन इन लॉन्ग टर्म होगा. ये सिर्फ टोटका था which didn't even work. और अगर आइंदा भी सालों में हुआ तो it will work for mainly a year or two. इससे ज्यादा वो ये चीज काम नहीं करेगी जब तक आप उसके स्मॉग की सोर्स को काउंटर नहीं करेंगे. Absolutely. And I think वो जो signal free वाली बात है, they are creating signal free on one side and basically doing the short term measures like artificial rain. I think that doesn't make sense. So looking forward, अगर हम देखें, how do you see Lahore and Islamabad evolving with other, for example, Ruda is one, and other initiatives. There is also an initiative regarding the elevated expressway. But if we talk about policy statements of multiple parties, they say that we would be reducing the carbon footprint. But it doesn't seem like the case when we see the policy and when we see the master plan. Yeah. This is a complex question. Hypothetically, क्या होगा वो मैं उसका आंसर आपको बता सकता हूँ. But ये पॉलिसी ऑलमोस्ट हर तकरीबन 2 साल बाद चेंज हो रही है. इवन दो इतनी देर में हमारी गवर्नमेंट नहीं चेंज होती, इतनी देर में पॉलिसी चेंज हो जाती है. तो एक गवर्नमेंट में 2-2 3-3 दफा भी पॉलिसी चेंज हो जाती है. सो इट्स वेरी हार्ड टू से कि जी क्या होगा. बट इफ आई सी लेट्स से लाहौर's ट्रांसपोर्टेशन मास्टर प्लान, लाहौर's पब्लिक ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान, इसके अंदर उसकी सारी लाइन है. उसके अंदर अभी एक तो एडिशनल लाइंस भी हैं और जो एग्जिस्टिंग लाइंस हैं जो कि बन गई हैं उसकी एक्सटेंशन भी है, एंड अ लॉट ऑफ बस लाइंस भी हैं. इफ वी सी दैट, देन उससे लगता यही है कि लाहौर का जो डाउनटाउन एरिया है दैट वुड बी अराउंड गुलबर्ग, गार्डन टाउन, ये वाला एरिया लाहौर का डाउनटाउन होगा और इसमें डेंसिटी इंक्रीज करेगी. इसके अंदर बिल्डिंग्स ऊपर जाएंगी और इसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्शंस इंप्रूव होंगे, एंड a lot of focus is going to be revolving around कि offices इस एरिया में हो और families, youth, workers from different cities वो भी एक अपार्टमेंट इसी एरिया के अंदर अफोर्ड करके रह सकें. So it's going to be created like a downtown. उससे यही समझ आती है. Where does Ruda fit into that? I absolutely don't understand. Ruda के अंदर काफी सारे इश्यूज हैं. उसके चैनलाइजेशन का सबसे बड़ा इशू है. आप रावी को चैनलाइज तो कर लोगे, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. रावी को चैनलाइज आप कर लोगे, लेकिन जो साइकिल ऑफ फ्लो है, ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन रावी, वो बहुत एक्सट्रीम है. जब मॉनसून आता है और इंडिया में भी उधर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो उसको छोड़ देते हैं पानी को. और रावी का जो फ्लड प्लेन है, जो फ्लड जिस एरिया में रावी ने फ्लड करना होता है, वो ऑलमोस्ट हर 2-3 साल बाद वो फ्लड किया होता है. ऑलमोस्ट एक जो रावी का बेड होता है वो मॉनसून में फिल्ड होता है और उसके जो साइड पे कुछ फ्लड प्लेन उसको ऑलरेडी उधर फ्लड कर रहा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे साल बाद रावी के एक्सटेंडेड फ्लड प्लेन्स के ऊपर भी फ्लड आया होता है. सो दे आर क्रिएटिंग दिस चैनल व्हिच इज गोइंग टू सॉर्ट ऑफ, रावी में जिस सीजन में पानी नहीं होता उस सीजन में रावी में ठीक पानी होगा. बट व्हाट आर दे गोइंग टू डू व्हेन फ्लड कम्स? आई हैव नो आंसर टू दैट. दे आर सेइंग दे आर गोइंग टू क्रिएट बराजेस और उससे वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बट पानी को इस तरह से कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है. और ये हम देख ही चुके हैं डाउन द लाइन, सॉरी डाउन स्ट्रीम. इंडस वगैरह में बराजेस बनाए और वहाँ पे सारे बराजेस बने हैं, बट उधर फ्लड्स फिर भी आते हैं. जब भी फ्लड्स आते हैं उधर काफी एक्सट्रीम आते हैं. सेकेंडली, टोपोग्राफी ऑफ पंजाब प्लेन्स.
generally river is at a lower elevation than its surrounding. Yeah. This does not happen so often in Punjab cities, where river is not necessarily the lowest point. Lahore का majority of the area जो currently Lahore है, it's not on a lower plane than Ravi. और आपको लाहौर का जो सारा ड्रेनेज मैकेनिज्म है वो बारिश का पानी आता है नालों में जाता है. अभी तो वो भी काफी खराब है, उसको भी काफी उसने अपडेट होना है, बट वो सारा नालों में जाता है, वो नाले के बाद उधर जाता है, रावी के पास जाता है, और फिर पंपिंग स्टेशन हैं जिसमें वो उस ड्रेन में से उठा के रावी के अंदर फेंकते हैं. So you don't have a natural gradient जिससे पानी फ्लो करता है रावी में. You have to pump it to put it into Ravi. When you're going to develop the area around Ravi and you're going to create a city, a new city over there, then it's going to make it even tougher to sort of drain water off existing Lahore into that city. I genuinely hope they have considered this when going ahead with Ravi city. मुझे कोई मैं इतना को convinced नहीं हूँ they would have. Secondly, उस area पे majority of the area, because it's a floodplain of a river, it's very fertile agricultural land जिसके ऊपर वो बना रहे हैं. तो that means more of your agricultural land is going to go away. अब उसके ऊपर जो भी उगता है छोटा मोटा वही सिटी को प्रोवाइड हो जाता है. फूल भी उगते हैं उसके ऊपर, वीट भी उगता है, काफी सारी चीजें उगती हैं उसके ऊपर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी उगती हैं, वही सिटी को प्रोवाइड हो जाता है. जब वो उधर नहीं उगेंगी and you're going to grow it somewhere else, then you need to transport that into Lahore as well. That means your transportation footprint of your food is going to increase as well. And that's creating another emission scenario जिसके अंदर emissions increase होंगी. So emissions and also inflation, I think. Inflation would also increase. Yeah. Because transportation from other areas would be difficult. Yeah, so I believe what they're doing in Ravi city is sort of an ecological disaster, sort of an ecocide. But yeah, let's see. I believe they have taken a decision that they're going to go ahead with it. So let's see what they do. Awesome. So I think we are closer to the end. So as you conclude, what would be the advice that you would like to give to the aspirants for who would like to become urban planners, or any general advice for the general public? Yeah, my advice to general public would be to take an interest in this matter. इस चीज में नहीं कि आपके इलाके में फ्लाईओवर बन गया तो आप उसके ऊपर खुश हो कि हमारे इलाके में फ्लाईओवर बन गया. आप इस चीज को भी कंसिडर करें कि क्या आप बाहर जा सकते हैं, आप अपनी सड़क पर बाहर जाके चल सकते हैं, चल फिर सकते हैं. आपकी जो करीबी मार्केट है, आपको उधर जाने के लिए कितनी मुश्किल पेश आती है. क्या आप अपने घर से निकल के चल के अपनी करीबी मार्केट में जा सकते हैं? आपको ये तो नहीं कि आपको कोई गाड़ी की जरूरत है कि आपको कोई गाड़ी देगा, फिर आपको गाड़ी से अपनी करीबी मार्केट में जाना पड़ेगा. और आपके एरिया में कोई लेजर एरियाज हैं, कोई आउटडोर स्पेसेस हैं जिधर आप बस जाके बाहर बैठ ही जाओ. आई नो काफी लोग वो हीट की बात करते हैं, लेकिन हीट भी कुछ महीनों के लिए होती है, बाकी सालों में तो आप बैठ ही सकते हो. सो आपको ये वाले इश्यूज तो नहीं है. आप चल सकते हो, चल फिर सकते हो अपने इलाके में. अगर आप ये सारा कुछ कर सकते हो, चल भी सकते हो, मार्केट भी जा सकते हो, किसी पार्क में जाके बैठ नहीं सकते हो, तो इट मेक सेंस कि आपका एरिया फिर इसका मतलब अच्छा है. लेकिन अगर नहीं कर सकते ये सारा कुछ, तो यू नीड टू start asking your authorities that why can I not move around in my area without a car? And that I believe if you can just do that, if people can just ask the authorities this basic question, I believe we will be on our way to addressing a lot of our urban planning problems. Sounds fascinating. I think great advice. So I think we are close to the end. So thank you so much, Momin. I think it was an absolute pleasure. Yeah. I think incredible insights. It would be helpful for the audience as well. For me personally, I think it was a eye-opening conversation. So thank you. Thanks a lot. Yeah, thank you, Dinesh. Thank you for giving me the opportunity to talk about this. Awesome.